हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11 लगभग कवर करने वाले हैं और इसके बाद अगर कुछ पोर्शन बच गया है तो क्लास 2 में हम कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम 11th 12th क्लास की साइंस की बुक हम कवर करेंगे। 11 12 की बुक में से गाइस काफी कुछ आने वाला है, आप सभी को पता है, तो उन दोनों को कवर करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एक क्लास में एक सब्जेक्ट हम करेंगे। वो क्लास हमारी लंबी हो सकती है लेकिन हमें करना ही इस तरह से पड़ेगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर सिस्टम दिया हुआ है। 11th के में कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर, डाटा इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये काफी दिया हुआ है। सेकंड चैप्टर में आपका एनकोडिंग स्कीम दिया हुआ, विद नंबर सिस्टम दिया हुआ। ओके, थर्ड चैप्टर में आपका इमरजेंसी ट्रेंड दिए हुए है। फोर्थ चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग दी हुई है, एल्गोरिथम वगैरह। ओके, और फिफ्थ चैप्टर में आपका दिया हुआ है फिफ्थ चैप्टर में गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन, मतलब पूरा पाइथन दिया हुआ है। सिक्स चैप्टर में आपका फ्लो दिया हुआ है। ओके, और सेवन चैप्टर में आपका फंक्शन दी हुई है। एट चैप्टर में आपका स्ट्रिंग दिया हुआ है, वो पाइथन में दिया हुआ है। लिस्ट भी आपका पाइथन में दिया हुआ है। 10 में आपका टकला वगैरह पूरा पाइथन का है। 11 में आपका सोशल के इम्पैक्ट दी हुई है। ओके, 11 चैप्टर है आपके, तो इसमें आपका काफी सिलेबस कवर हो रहा है। 11 की बुक में भी आपका काफी कुछ सिलेबस कवर हो रहा है। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते, देखते कितने चैप्टर हमारे कवर हो सकते हैं गाइस। ओके, चैप्टर 1 में आपका बोला गया है पहले कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होता है भाई, सभी को पता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सपेक्ट डाटा इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट आउटपुट। ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कंप्यूटर होता क्या है। ओके, ये कंप्यूटर सिस्टम का जो डायग्राम है वो आप बना सकते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी कंपाइल इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, memory unit, input output service and storage devices. All these components function together as a single, deliver the drive output. Computer system come to various form of size. It can vary from a high end server to personal desktop, laptop, table computer for a smartphone, etc. तो ये डायग्राम है। जब आप भी आपका कंप्यूटर का पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या होता है तो आपको ये डायग्राम बहुत जरूरी है बनाने, बना के आना। इनपुट डिवाइस है, फिर आपका बीच में सीपीयू लगा हुआ, सीपीयू के पार्ट्स आपको CUALU ओके। सेकंड डिवाइस आप ये नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। देन आउटपुट डिवाइसेस है। उसके बाद है आपका सीपीयू को एक्सप्लेन करना। सीपीयू होता क्या है गाइस? It is an electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and using reference as the brain of computer is commonly called the processor also. Basically, a CPU can be placed one or more microchips called the integrated circuit IC. The IC compares semiconductor material. Okay. The CPU is given instruction and data through the program. The CPU then fetch the program and data from the memory and perform arithmetic and logic operation. It gives the instruction and store the result back to the memory. Okay. While processing, the CPU store the data as well instruction in the local memory called the register.
Okay, register are part of CPU chips and they are limited in size, number. Different register are used for storing data. Instruction are intermediate result. Okay, intermediate मतलब वो तुरंत देता है. Other than the register, the CPU has two main component: arithmetic control unit. Okay, ALU perform all the arithmetic and logic operation. They need to be done as per the instruction in the program. CPU control the sequential instruction execution, interpreter instruction, and guide data through the memory. ALU and input are output devices. CPU also popularly known as microprocessors. पता CPU को microprocessor हम बोलते हैं. ओके, और ये सब आपके इनपुट डिवाइस है: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन. और ये लेफ्ट साइड में आपकी सारी आउटपुट डिवाइस है: मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर. ओके, the device through which control signal are sent to the computer are from the input device. Okay, कंप्यूटर सिस्टम को जो सिग्नल सेंड करता है उनको हम कंप्यूटर डिवाइस बोलते हैं. These device convert the input data into a digital form that is expectable of the computer system. Some example: input device include keyboard, mouse, scanner, touch screen, etc. Okay, specially designed the keyboard are also available to help the usually inspiring the entering data into a computer. Besides, we know the enter data through voice. For example, we can use Google Voice search to search the web before we can input the search string through our voice. Data entered through input device is temporarily stored in the main memory, called also RAM of the computer system, for permanent storage and future use. The data as well as instructions are stored permanently. Additional storage location and called the secondary memory. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस. The device that receive data from the computer for display, physical protection, etc., production, etc., is called the output device. It converts digital information into the human understandable form. Human understand by मेरी language हुई उस word human कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, project, handphone, speaker, printer, etc. Some input device are the output device. Mainly display the useful for a usually challenged person to understand the textual output generated by the computer. A printer is the most commonly used device to get output in physical hard copy form. Three types of commonly used printer are: inkjet printer, okay, laser jet printer and dot matrix printer. तीन आपके प्रिंटर दिए हुए: inkjet printer, laser jet printer and matrix printer. Nowadays there is a new type of printer called the 3D printer, which is used for both the physical replace of digital 3D design. These printers are being used to manufacture in the industry to create the prototype of producer. Their use is also being explored the medical field, particularly of developing बॉडी ऑर्गन. इससे आप क्या समझते हो? आपको प्रिंटर देखना होगा, प्रिंटर होती क्या है. ओके, टाइप्स ऑफ प्रिंटर. टाइप्स ऑफ प्रिंटर में आप इंकजेट प्रिंटर लिखोगे, लेजर प्रिंटर, और आप डॉट मैट्रिक्स एंड 3D प्रिंटर, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा. ए पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ स्ट्रिप पेपर दैट स्टोर डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ होल्स और प्री डिफाइंड पोजिशन. ओके, अब आपका आता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आएगा? फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न
the powerful data processor computing device that evolved in the relatively short span time. evolution of कंप्यूटर आपका बताता कब कौन सा कंप्यूटर आया था और टाइम क्या है उसका, वो सब बताता है। ओके, तो 19 पहले आपका आया है, ये आया था 500 BC। ओके, जो अबेकस होता है सबसे पहले वो आपका प्रिंटर आया था, सॉरी कंप्यूटर आया था अबेकस। अबेकस में क्या है, कंप्यूटर इज a attribute to invention of abacus in 300 years ago. It was the mechanical device capable for doing the simple arithmetic calculation only. फिर आपका 1642 में आया था पार्ट्स लाइन। ओके, इसमें आपका था Blaise parts invented the mechanical calculation known as parser calculator, as parser do addition and subtraction of two number directly and multiplication and division through the repeated addition of subtraction। फिर आपका आया था 1834 में, ठीक है, ये 1642 में, फिर 1834 में आपका आया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है, चार्ल्स बाबेज इन्वर्टेड द एनालिटिकल इंजन। ये दोनों अभी आपके मैकेनिकल डिवाइस चल रही है। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस, ये भी आपकी यही है, फॉर इनपुटिंग प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट विच इज कंसिडर्ड ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, चार्ल्स बाबेज इसको लेकर आएगा। फिर टेबुलेटिंग मशीन, हार्मन Oldest design a tabulating machine for the summary of data stored on the punch card. It is considered to be first step toward programming. फिर 1937 में आएगा आपका टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन कंसेप्ट वाज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन दैट was capable for solving the problem by executing the program store can be punch card. Okay, फिर जॉन वॉन Newman introduction the concept of stored program computer which can capable for storing data as well as program in the memory. The advanced and then the untaxed computer were developed based on the concept. फिर आपका आता है integrated circuit. An integrated circuit IC is a silicon chips which contain the entire electronic circuit on a small area. The size of computer reduced because of IC. ओके, तो ये सब इसमें है। आपका आता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपका पूरा आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता क्या है गाइस। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपका इनपुट जो आपका सीपीयू होता है वही होता है आपका सेम इनपुट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी एंड आउटपुट। ओके, इट कंसिस्ट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन, ए मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके, नॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि इसकी मेमोरी में हम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दोनों ही एक साथ स्टोर करते हैं। ओके, टू सेंड और रिसीव द आउटपुट डाटा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, इज द फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामर कंप्यूटर बेस्ड ऑन द Newman architecture. ENIAC. During the 1970 large-scale integrated of electronic circuit allowed integrated of complete CPU on a single chip called the microprocessor. Okay, predicting exponential growth to the number of transistors that could be assembled in a single microchip. In 1980, the processor power of computer increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chips turned to a very large scale integration VLSI. Further advancement in technology has made it flexible to fabricate high density of transistor and other component. Okay, single IC called the super large scale integrated. Ideal introduction, the first personal computer PC for the home use in 1981 and Apple introduction Macintosh. Okay.
ये आपका ये लिखा और पढ़ लीजिए। द पॉपुलरिटी ऑफ पीसी by the introduction of graphical user interface based on operating system by Microsoft and other in the place of computer with only command line interface like Unix, DOS, ये सब भी आपका around 1990s में आ गया था। The growth of World Wide Web had associated mass use of the computer, and thereafter the computer have become an indispensable part of everyday life. Whether the instruction of laptop, personal computer are made portable to a great extent. These are followed the smartphone, tablet, and other personal digital assistant. There are devices have leverage the technological advancement in processor, miniature faster memory, high speed data, and connectivity mechanical. The next wave of computer devices include the wearable gadgets such as smartwatch. ओके ये सब आप इसमें याद रखेंगे, नहीं पूछेंगे। अब आता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? एक कंप्यूटर मेमोरी नीड्स मेमोरी, a computer system needs memory to store data and instruction for processing. Whenever we talk about the memory of computer system, we usually talk about the main memory or primary memory. Secondary memory also storage device is used to store the data, instruction and result permanently for the further use. Okay. मेमोरी यूनिट्स ऑफ मेमोरी देख लेते हैं। एक कंप्यूटर मेमोरी यूज बाइनरी नंबर टू स्टोर द प्रोसेस डाटा। बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 होते हैं, आप सभी को पता है। विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। ओके, द होल द बिट फैदर बिट आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड A+4। ठीक है, 4 बिट आपकी होती है, इस कॉल्ड निपल। 4 बिट को आप बोलते हो निपल। ओके, ये सब आपको लिख के आना है कि दीज बिट्स आर ग्रुप। अगर हम उसको ग्रुप कर देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। 4 बिट का ग्रुप होगा, उसको हम निपल बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ निपल आप 1001। ओके, 4 बिट है। द 2 निपल्स आर कॉल्ड द 8 बिट, वर्ड इज कॉल्ड द बाइट। ओके, ये सब 8 बिट के है। लाइक अनदर स्टैंड्स यूनिट बाइट आर ग्रुप टुगेदर टू मेक द बिगेस्ट चंक ऑफ यूनिट मेमोरी। देखो ये है आपकी मेमोरी का मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा। पहले KB आएगा, फिर MB आएगा, फिर GB आएगा, फिर TB आएगा, फिर आगे भी आता टेराबाइट में है। ओके, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अब इसमें 1 KB 1024 MB, 1 MB 1024 KB। ओके, बाइट 1 KB में 1024 बाइट होता है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था एक बाइट में क्या होता है आपका। ओके, 1 GB 104 MB, 1 TB 104 GB। ओके, बाद PT आता है आपका, देखो ये यहाँ दिया हुआ PT, PB, EB, ZB, YB। ओके, PT मतलब पेटाबाइट, एक्सट्राबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। उसमें 1 PB में होता है आपका 1024 TB, 1 EB में होता है आपका 1024 BP, 1 ZB में होता है आपका 1024 EB, 1 YB में होता है आपका 1024 ZB। टाइप्स ऑफ मेमोरी बताई गई है यहाँ पर गाइस। टाइप्स ऑफ मेमोरी में क्या बताया गया है आपका? ह्यूमन बीइंग memorable many things over a lifetime and the recall from the memory to make a decision or some action. We do not rely on our memory completely, and we make notes and store the information, data and information using other media such as notebook, manual, okay, document, etc. Similarly, computer have 2 types of memory आपके, primary memory and secondary memory. Primary memory is an essential component of the computer system. Essential component of the computer system. Program and data are loaded into the primary memory before processing is. The CPU interact directly with the primary memory to perform read or write operation. It is of 2 types: random access memory and read only memory.
RAM is volatile memory. Okay, ROM is one volatile memory. RAM, as long as the power is supplied of the computer, it retains the data in it. But as soon as power supply to turn off, the all the content of the RAM are wipes out. Okay, it is used to store data temporarily while the computer is working. Whenever a computer is starting or a software program is launched, the required program and data are loaded into the RAM for processing. Okay, RAM is usually referred to the main memory and is faster than the secondary memory or storage device. Okay. Then उसके बाद आता है आपका ROM. ROM is non-volatile, which means its content are not lost even when the power is turned off. It is used as a small but faster permanent storage of content which are rarely changed. For example, the startup program would read the loaded the operating system into primary memory, store the ROM. Okay, cache. कैश मेमोरी क्या होती है गाइस? देखिए वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि RAM, सपोज देयर इज ए कंप्यूटर विद RAM बट नो सेकेंडरी मेमोरी कैन स्टोर द सॉफ्टवेयर ऑन दैट कंप्यूटर. कैश मेमोरी क्या होती है? RAM इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी. ओके, but not as faster as computer processor. So launch a RAM, a CPU may have a slowdown. The speed of the operation of the CPU is very high. Speed memory is placed between the CPU and the primary memory. Okay, known as cache. It stores the copies of data from the frequently accessed primary memory location, reducing the average time required to access data from the primary memory. When the CPU needs some data, it first examines the cache. In case of the requirement is met, it is read from the cache, otherwise the primary memory is accessed. Okay, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है वो देख लीजिए. सेकंड प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, आइदर volatile or read only memory. Okay, these a computer system need auxiliary or secondary memory to permanently store data or instruction for the future use. The secondary memory is non-volatile and has large scale storage capacity than primary memory. It is slower and cheaper than the main memory, but it cannot be accessed directly by the CPU. Content of the secondary memory need to first brought into the main memory of the CPU to access examine for secondary memory device include hard disk, driver, HDD, CD, DVD, memory card, etc. These days there are secondary devices like SSD which support very fast that transfer speed of compared to early HDD. Data transfer between the computer have become earlier and simple due to the availability of small size or portable flash or pen drive. Okay. एंड उसके बाद आपका आता है द डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू. सीपीयू और मेमोरी के बीच में आपका डाटा कैसे ट्रांसफर होता है. डाटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी डाटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड secondary memory. Data are transferred between different components of computer system use physical wire called the bus. For example, bus is used for data transfer between the USB port and hard disk or between the hard disk and main memory. Bus is three types: data bus, transfer data bus, between different component. Okay, address bus, transfer address between CPU and main memory. Okay, and address bus, address of the memory location that the CPU want to read and write is specify the address bus. And उसके बाद आपका आता है कंट्रोल बस to communicate control signals between different component of computer. All these three bus collectively make the system bus. So जाए फिगर
तो सिस्टम बस का डायग्राम ये है आपका। पहले सीपीयू आएगा, फिर मेमोरी आएगी, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस आएगा। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, फिर कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। ओके, फिर उसे आप ऐसे बना सकते हो। एरो सभी के पास एरो जा रही है। तो डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट फॉर द सिस्टम बस as the CPU interact directly with the main memory. Okay, आप सभी को पता है, any data entered from the input device or the data to be accessed from the hard disk need to be placed on the main memory. ठीक है, और the further processing the data is then transferred between CPU and main memory using bus. The CPU plays on the address bus the address the main memory location from which is want to read data or data write data. While the executing the instruction, as CPU specify the read or write control signals. This उसके बाद we can write to the specific address provided through the address bus. In case of read operation, the CPU specify the address and the other is placed on the data bus by a dedicated hardware called the memory controller. The memory controller manages the flow of data into the आउट ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। फिर आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में देख लीजिए क्या है आपका। ओके, in earlier days, a computer's CPU used to occupy a large room or multiple cabinets. The CPU advancement in technology, the physical size of CPU has reduced. It is now possible to place a CPU in a single microchips only. The processor CPU which is implemented on the single microchip is called the microprocessor. Nowadays, almost all the CPU are microprocessor. The terms are usually synchronized by practical purpose. Microsoft is a small size electronic component inside a computer that carry out various tasks involved in the data processing as well as arithmetic and logic operation. These days, a microprocessor is built over an integrated circuit comprising millions of small components like register, transistor, and diode. Microprocessor has even time in terms of their increased processing capability and decrease the physical size and reduce cost. Currently available microprocessors are capable to processing millions of instructions per millisecond. Okay, the types of microprocessor along with their generation, time period, understanding technology theory, they are the in preparation in early 1970. ये माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन आपका LSC आया, सेकंड आपका चिप्स आई LSC, थर्ड आपका VLSC, फोर्थ आपका VLSC और फिफ्थ आपका SLSC। पहले आया आपका 1970 से 1973, फिर 74 से 78, फिर 79 से 80, फिर 81 से 90 और 95 टिल डेट। वर्ड साइज था आपका फर्स्ट जनरेशन में 4 से 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। मैक्सिमम मेमोरी साइज था आपका 1 KB, 1 MB, 16 MB, 4 GB, 64 GB। क्लॉक स्पीड था आपका 108 kHz टू 200 kHz। ये आप हो सकता है। फोर्थ है इसमें सिंगल और फिफ्थ में आपका अभी जो यूज हो रहा है वो मल्टी कोर। एग्जाम्पल इंटेंट 8080, Motorola 6800, 8085, Inter 8085, Inter 80386, Motorola 68030। ओके, तो एक्शन सेलेरिकॉन ये सब आपका भी यूज होगा। ये सब आपको बताया गया है क्या क्या है। फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है देख लीजिए भाई। The computer control in a small computer device which has CPU, fixed amount of RAM, ROM and other parts was or embedded on a single chip as compared to the microprocessor that has only a CPU on the chips. That structure of a microcontroller is shown in the figure 1.9. Keyboard, mouse, washing machine, digital camera, pen drive, remote controller, microwave,
few examples of microcontroller. Okay, those are the designed for specific tasks, hence the size as well as the cost of reduction. Because of the very small size of the microcontroller, it is embedded the another device of the system to perform a specific functionality. For example, the microcontroller in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle without any human intervention. The cycle starts with the filling of water, after which is clothes are soaked and washed. Therefore, the water is drained and the cloth and spine dry. The simple use of microcontroller has permitted repeating execution to traditional tasks automatically without any human intervention, thereby the saving precious टाइम. ओके, तो ये इसका डायग्राम दिया हुआ है. सी क्लॉक है, फिर सीपीयू है, उसके बाद इनपुट, आईओ पोर्ट, आउटपुट, मेमोरी होगी या सिस्टम बस है. डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है वो देख लीजिए. Data. A computer is primary for processing data. Computer system consists everything as data. It consists everything as data. Be it instruction, picture, song, audio, document, etc. Data can also be raw and unorganized fact that has processed to get meaningful information. So understanding the concept of data along with the different type of uses to understand the overall function of computer. Sometimes people use the term data, information and knowledge interchangeable, which is incorrect. Okay, data and its type. ये देख सकते हो आप. A computer system has many input devices which provide it the raw data in the form of fact, concept, instruction, etc. Internally, everything is stored in the binary form 0 and 1, but externally, data can be input to the computer in the text from consisting of English alphabet, AZ, small AZ, numeric 0 to 1 and special symbol. Okay, data can be input in other language too, or it can be read from the file. The input data may be form of different source, hence it may be different format. For example, an image is a collection of red, green, blue picture. A video is made of the frame and free recipe is made of the numeric and non-numeric characteristic. Primary, there are three type of data. Okay, structured data में क्या होता है? Data which is follow a strict report structure and it is easy to comprise is called the structured data. Such data with a pre-specified a tabular form may be stored in a data file to access the future. Those instruction data related to monthly attendance of student maintain the school report. Okay. Second आपका आता है, it clear that such data is organized in raw column format and easily understandable. Structured data may be stored in ascending or descending order. For example, attendance data is stored in the increasing order of column month. Other example, structured data include the scale transaction, online railway ticket booking, ATM transaction, etc. Unstructured data क्या होता है? Data which are not organized is a predefined record format is called the unstructured data. For example, include audio, video file, graphic, text, document, social media portal, satellite system, etc. So a report with the monthly attendance record details sent to parents such as data and unstructured as they consist textual content as well as graphic which do not follow the specific format. जैसे आपका ये वाला है, तो ये आपका unstructured डाटा है मंथली अटेंडेंस का. Semi structured data क्या होता है guys? Which data which have no well defined structure but maintain the internal tag or marketing to separate data element are called the semi-connected data. For example, include small document, HTML page, comma, separate values, CSV file. So the example of semi-connected data containing the structure month-wise attendance detail in the form of there is
there is no specific format of the data attendance record. Here such data value are procedure by the tag name, month, class, attendance for the interpreter of the data value of the processing. जैसे ये आपका नेम है, मंथ है, तो ये क्लास है. Data capturing, storage, recovery. Okay. The process data we know to store the input and capture the data. This is followed by its storage in a file or a database so that it can be used in future. Whenever data is to be processed, it is first recovery from the data file or database so that we can perform the further action on it. First आपका data capturing. It includes the process of gathering data from the different source in a digital form. This capturing may have some instruction like keyboard, barcode reader used to shopping outlet, commands or post over social media, remote sensor on the earth, orbit, satellite, etc. Sometimes heterogeneity among data source make data capturing a complex task. ओके, जैसे बारकोड रीडर ये आपको आपके डाटा को कैप्चर करता है. डाटा कैप्चरिंग इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ, ये मैंने बता दिया आपको. डाटा स्टोरेज इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड कैप्चरिंग डाटा और प्रोसेसिंग ऑर्डर. Nowadays data is being produced at a very high rate and therefore data storage has become the challenge task. However, the decrease in the cost of digital storage device has helped in simply this task. There are numerical digital storage device available on the market like the so figure in 1.7. Okay, so the barcode reader अभी दिखाया तो मैंने. Data keep on increasing the time when the storage device also required to be upgraded periodically in large organized computer with a large and faster storage called the data server are deployed to store amount of data. Such a dedicated computer help in processing data efficiency. However, the cost both hardware and software by setting up the data server as well as it is maintained the high, especially for small organized and setup. Data recovery क्या होती है देख लीजिए. It involves the fetching data from the storage device for it is processing as per the user requirement. The database grows the challenge involved in searching and recovery of the data. The acceptable time also increase the minimizing data access time to crucial or faster data processing. Data डिलीशन एंड रिकवरी. ओके, हम डाटा को डिलीट और रिकवरी कैसे कर सकते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद द डिलीटेड डाटा इज it is deletion. The storage device can be malfunction or crashed down resulting in the deleting of data. Use can accidentally erase data from the storage device or a hacker or malware. ये शायद आपका वो है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग में. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ सॉफ्टवेयर सारा. ओके, तो उसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा करवाती हूँ. काफ़ी ट्रांसलेटर वगैरह है, काफ़ी टॉपिक होती है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाती हूँ गाइस. ओके, हम पूरा चैप्टर 11 वो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस 11 का 12 का एनसीईआरटी बुक का कवर करेंगे. और अभी 2 दिन में ये पूरा कवर आपका करवा दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहे. ओके, थैंक यू गाइस.